students. Today we will discuss about the chapter tax planning and management. In this chapter tax planning and management, there are four concepts. One is tax planning, one is tax management, one is tax avoidance, and one is tax evasion. You need to consider the four words: tax planning, management, avoidance, and evasion. First, we will discuss about tax planning. You all know planning is the future course of activity. It means it is thinking before doing. So, it is easy to understand that tax planning means arranging the affairs of the business or arranging the transactions of an individual. In case of an individual, arranging his transactions, and in case of business, arranging his affairs in future in such a manner so that the tax liability of either the individual or the business is minimum. So tax planning is related to future. गोटे कथा एठी बहुत भल भाव ध्यान देवा पड़ो जे टैक्स प्लानिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर. देन टैक्स मैनेजमेंट. व्हाट इज टैक्स मैनेजमेंट? टैक्स मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू बोथ पास्ट, present and future. How these are related to past, present and future? I will give some examples of tax management. Suppose in the past we have some assessment proceedings or appeals we have made to the income tax department. So arranging or managing those appeals or revision. Suppose we have revised the income tax return which we have been filed in the past, that comes under tax management. ओडिया कहले एमती हम टैक्स मैनेजमेंट माने आमे पास्ट रे करिथिबा टैक्स को नहीं कोनोसी ट्रांजैक्शन जेमति कि आमे पास्ट रे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करछे किंतु सेटा भूल हो जाइछि. सो आमे प्रेजेंट रे कोन कर परिबा ना ताकू रिविजन कर परिबा. सपोज आमे पास्ट रे गोटे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रे गोटे अपील फाइल करछे हमरो पास्ट इनकम टैक्स रिटर्न पाई. आमे कहूचे जे आमे इनकम टैक्स ठीक देइछे किंतु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रो कहबा कथा जे आमे हमरो इनकम को कम देखैछे सिट पे आमे अपील फाइल करछे इनकम टैक्स अपील पाखरे, कमिश्नर इनकम टैक्स अपील पाखरे. त माने एटा हमरो पास्ट ट्रांजैक्शन को आमे एबे मैनेज करछे. And now present. What is present? Present means an assessee has to file income tax return in the due date. It means in present time he has to manage his tax affairs. How in present time he will manage his tax affairs? By filing his return of income in time and deducting his, if he is a business, it has a business, then deducting the tax at source in time. This is known as present. And what is future? Future means arranging the affairs of the business in such a way, arranging the transaction of business in such a way by taking the deduction and exemptions into mind so that in future the income tax liability of the business will be minimum. So this is tax management. मुझे ओडिया कहबी तार टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट भितर डिफरेंस होची. टैक्स प्लानिंग माने केवल फ्यूचर रो कथा चिंता करबा जे फ्यूचर रे आमे टैक्स रो ट्रांजैक्शन किपरि भाबरे करि परिबा बा आमे कोठी इन्वेस्टमेंट करबा, आमे कोमिति कोठी हमर पैसाटा लगेबा सो दैट हमकु 80C to 80U अंडर रे हमकु डिडक्शन मिलिबो आ हमर इनकम टैक्स लायबिलिटी मिनिमम होबो. किंतु टैक्स मैनेजमेंट माने आमे टैक्स मैनेज करबा हमर पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को. पास्ट माने ऑलरेडी आमे सपोज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देछि सेटा भूल अछि, आमे प्रेजेंट रे ताकू रिवाइज कर परिबा. प्रेजेंट रे मैनेज केमत करबा ना सपोज आमे हमर इनकम टैक्स रिटर्न ठीक समय रे डिपॉजिट करबा, टीडीएस ठीक समय रे काटिबा, ताले आमे प्रेजेंट रे ठीक रे मैनेज कले. फ्यूचर केमति मैनेज करबा? फ्यूचर मैनेज करबा माने इट टैक्स प्लानिंग आसीबो. फ्यूचर मैनेज करबा माने वी विल अरेंज आवर ट्रांजैक्शन इन सच ए मैनर सो दैट इन फ्यूचर we have to pay less amount of tax. So this is the difference between tax planning and tax management. Another concept, two concepts are there. One is tax avoidance and one is tax evasion. What is the difference? Tax avoidance means
by taking into account the deductions and exemptions, we will manage our affairs in such a manner so that we can get more deductions and more exemptions. That is tax avoidance. It means आमे avoid करिबा tax को, avoid करिबाटा legal, सेटा illegal नुहे. Tax evasion is illegal. The difference between tax avoidance and tax evasion is that tax avoidance is legal because by legally taking into account the deduction and exemptions, we are minimizing our tax. That is tax avoidance. And what is tax evasion? Tax evasion means आमे जानी सुनी टैक्स ठकिबा, त माने आमे ठीक समय रिटर्न फाइल करबा नै. इनकम हमर जतिक अछि आमे सेतिक न देखै, कम इनकम देखैबा. आमे एक्सपेंसेस अधिका देखैबा जानी सुनी, जोटा कि इलीगल. सो टैक्स इवेजन इज इलीगल बट टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल. एठी आमे आउ गोटे कथा चिंता करबा. स्टूडेंट माने एठी टिके कंफ्यूज होंती. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फोर? मु तो डिफरेंस प्रथमे दुईटार देली. गोटे होची टैक्स प्लानिंग, गोटे टैक्स मैनेजमेंट. देन मु आउ गोटे डिफरेंस देली बिटवीन द टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन. वर्तमान मु चारिटा भितर कोन डिफरेंस अछि कहबी. प्रथमे होची आमे जे देखिबा तले प्रथमे टैक्स प्लानिंग. टैक्स प्लानिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर and tax avoidance is related to present, and tax management is related to present, past and future. And what is tax evasion? Tax evasion is related to present, which is always illegal. So from our four items, that is tax planning, management, avoidance and evasion, 3 are legal, 1 is illegal. Which 3 are legal? Tax planning is legal, tax management is legal, tax avoidance is legal, but tax evasion is illegal because in case of tax evasion, we are deliberately not filing the return of income, though we have the income which goes beyond the income tax limit. Then we are either undermining our income or we are overshowing our expenses. So tax evasion is always illegal. Thank you.